ओके, और क्या जानते हैं हम और क्या जो नया सीखना है वो देख सकते हैं कि इसके मतलब है क्या-क्या इसमें, उसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है? Okay. So let me share my screen. There is no an hard and fast, concept and theory we are going to discuss today, but only a certificate के राउंड देखते हैं कि क्या-क्या है, कैसे अगर हम इसको कर सकते हैं तो ठीक है। So let me share my screen and I will say that what I found it. Okay. तो सबसे पहले तो ये the first thing that the syllabus that we already gone through it. Okay, not this syllabus exactly. This is the one. Okay. Listen, let me see the foundation certificate. Okay, this is the one that we were going through, right? Okay, what we things we need to learn and what it is cover. So almost half of it we already covered. This PDF we shared that to clear that certificate, what we should be knowing. Okay, we should know to clear this exam. Okay, so the name of the certificate, what technology it covered. So while going through the certificate, just through the recap, we get to know this Claude related and Claude SDK. This is the something new that in this group actually we have not discussed. Okay, we didn't know what is that exactly and how does it work exactly. Okay, but it is similar to the other one, that whatever the the Langgraph या बाकी जितने framework हैं, they are the concept similar to that only. Okay, it may be little bit different. Okay, so what I did actually, first I just gone through this one, then I was trying to open it, that how the Cloud Code SDK looks like. So this is the syllabus for it, and I just trying to see that same thing. You create the key, and then you will do some practical example and all. It is similar to that only. Whatever the things. तो ये वाला जो लिंक है, अगर आप देखोगे, so anybody want to go through link? So I was just going through this link only. Okay, and this is the one thing. Okay, and while one thing important actually, while I was just trying to get this Anthropic key. Okay. So through using my Cognizant ID, I was not able to create this one. Okay, that I did it by using my personal email ID. Okay, and I created the key. That is why we did for the other. Either it is Google or Grok or whatever maybe, so, or the OpenAI. It is similar to that only, that you have the key and then you start doing the coding. बाकी सब coding ही है, more or less here and there if you go through it, but it's nothing. Okay, so this is the step. Okay. Now coming to when I was just looking to the resources actually. Okay, so what I did, first thing that I uh, okay, so this one I gone through, then I gone through how the exam looks like exactly. Okay, so what I did, this is the exam certificate, and so this is the one. Okay, so when I registered through the exam, okay, using the convenient ID, I get to know these two PDF. Okay, so this is the syllabus, like these are the courses, the level 100 foundation. So this is the first course, and this is the detail, persona, professional or AI fluency, and this is the subject for. So this is one of the courses that you need to go through it. Okay, so when I was opening it, I can open like let's see exam. So okay, this is the one tab is saying for randomly selected question. I can start the exam, 15 question, total 60 question, 15 per scenario to go. Passing score 70, 90 minutes courses is there. Okay, and then I was just going through. Let's see what else I was going to. Let me go through the PDF and see if I will click this one. Open this one. It is opening again. Okay, so although I registered it, but once you are logged in using your ID. Okay, so I logged in. I created that using, and that's what it is saying. All of these I registered. If you see AI fluency status 15th lesson 01 of 15, this one I just started. So these are the courses it is showing, AI fluency and building with the Cloud API, 85 question. One of them I got completed, 101. This is the one, वो तो केवल रिक्वेस्ट ही था, वो तो पास ही हो गया. ठीक है, क्लाउड सर्टिफिकेट, फाउंडेशन सर्टिफिकेशन 2 और लेसन, क्लाउड कोड इन एक्शन, क्लाउड with Amazon Bedrock, Cloud with the Cloud Vertex AI, and 93. This is one of the courses. Then MCP and Advanced MCP, and Practical Cloud Certificate Foundation certification. Okay, there may be even for to just click on one certification और कुछ कंडीशन वो चेक करने के लिए भी वो they are putting one of the courses. But these are the courses that I enroll it. Okay, so using this one, all these one looks like that if you go through it, okay, and if you clear, so तो वही इसी यही सिलेबस लग रहा है मेरे को भी तो. ठीक है. ओके,
Now coming to same thing again, like most of the concept that we are there, more than 50% we already knew, we covered in this group. So that is how it looks like, so this is advanced MCP looks like that. We start playing it, then there's really some videos, and then you need to go through it. That's what it is. Okay, so these are the different videos that I open it. Okay, I just register for them. I yet to start. Okay, so this one we can do it, and I was looking for one of the LinkedIn posts. That is how I get to know. Okay, there one guy was mentioning cognizant, then I get to know. Let's try with the cognizant. Okay, and then I was able to create the link. Okay, so when I was, so this is the, those are the one of the resources, and these are the, so somebody they given the one medium post. Okay, some detail has been given to it, and then another thing was, let's see what it is inside. I just clicked it. Okay, so those 4 link I have pasted in the WhatsApp group. Okay, you can go through it. But it's saying a cloud certification guide. There is another link for that they give it. Okay, architecture and orchestration 27%, tool design and MCP 18%, cloud code configuration and workload 20%, prompt engineering structure 20%, context management and reliability 15%. So if you see this one we already covered it, this one we covered in this group. This is the new for us. Okay, this one we already covered it. Agentic architecture we already covered. ये तो 2-3 बुक कर ही चुके हैं, तो नया कुछ बोले तो 25-30% ही ऐसा हमारे लिए नया होगा, नहीं ज्यादा चीज हम कर ही चुके हैं। ठीक है, एक और इस ग्रुप में अगर उसका सिलेबस थोड़ा रिवाइज करें तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। ओके, मोहन जी आपने ये वाला लिंक सेंड किया है क्या? ये आप दिखा रहे हैं ये वाला? ये वाले लिंक में हाँ मैं भेजा हूँ, तो जो 4 लिंक भेजा हूँ ना सर, ठीक है, अच्छा तो इसमें दूसरा वाला वही लिंक है सर। ओके ओके, मैं इसको लिंक खोला। अच्छा ऐसे करते हो तो जाता है सर। हाँ ऐसे करो, दोबारा 2 बार में खुलता है, एक बार में नहीं खुल रहा। ओके गॉट इट। If I click this one, then you click down, then you will get to know it. Okay, तो ऐसा करते हैं उसको। And if you open the third link, if you click here, and then this is the link. Okay, नाइस। okay, so इसमें देखते हैं। Okay, this is the my console. Okay, from where I will get the key. और बाकी सब एग्जाम ही है, अगर एग्जाम को रजिस्टर करते हो आप तो बाकी तो अच्छी। आई हैव द लॉट ऑफ डुप्लीकेट लिंक, दिस वन, सो दिस इज द वन। सो सी अगर ऐसे करोगे तो उसका भी फिर दे रखा है इसलिए। अच्छा यहाँ पे और डिटेल में कि एजेंट लूप क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये आप बिना उसको लॉगिन करे कर सकते हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड वो मॉक एग्जाम भी दे रहा है सर, राइट? कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट, एग्जाम, सिमुलेशन। ओके, सिमुलेशन भी है, बिल्ड कोच। Oh, I think we need to explore it. Okay, but it has pretty much good detail. References, generals, यानी उन्होंने दे रखा है उसमें, उसके अलावा भी है। This is the one. And okay, so these are the different courses हैं। अगर उनका courses को एक एक करके उठाते हैं, ठीक है। If you see 101, so these are the concept, what is Claude, conversation Claude, chatbot, co-work, और ये है organizing your knowledge, introduction to the project, creating the artifacts, working with the skills, connecting these are the cloud concept completely 101, connecting with your tool, enterprise search mode for the deep dive, cloud action, use cases, other one. Okay, so looks like this one only. Let's see, cloud code with Amazon Bedrock से करोगे थोड़ा, I think this will be new for us if that is the case, because those who have not worked on AWS, they may be something new to them. लेकिन सब्जेक्ट से मेरे को ऐसे पता लग रहा है कि जैसे इंट्रोडक्शन कोर्स, एक्सेस द एपीआई, मेकिंग रिक्वेस्ट, मल्टी टर्न कन्वर्सेशन, चैटबॉट, सिस्टम प्रॉम्प्ट, टेम्परेचर स्ट्रीमिंग, कंट्रोलिंग डेटा स्ट्रक्चर, क्विजिंग, प्रॉम्प्ट एवेल्युएशन, रनिंग, वही कंसेप्ट है, बट देयर विल बी डिफरेंट वे, द कंसेप्ट आर सेम ओनली एवरीवेयर। ये पर बाकी सबसे कैसे काम करना है, थोड़ा सा हल्की सी मेहनत लगेगी, बट नॉट ए न्यू स्टफ। अच्छा, गूगल वर्टेक्स उसमें भी है, द वे पीपल यूज द गूगल वर्टेक्स, बट इफ यू यूज्ड वन, आई थिंक अदर यू कैन डू, बट द कांसेप्ट्स आर सेम ओनली। वर्टेक्स एआई सेटअप, वर्जन, सिस्टम प्रॉम्प्ट। मुझे इसमें एक चीज समझ नहीं आ रही है। जैसे ये लोग अमेजॉन बेडरॉक और ये गूगल वर्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट मींस दे आर, इफ दे आर यूजिंग दिस गूगल एंड अमेजॉन एपीआई,
then we are not using Anthropic API, right? अरे Agent उसमें still will be same. ऐसा ऐसा होता है इसमें गूगल क्लाउड वर्टेक्स एआई में कि वो प्लेटफॉर्म मैक्सिमली इट इज रिकमेंडेड फॉर द गूगल एआई एपीआई के लिए है और उसको रिकमेंड करता है, लेकिन वो ये भी ऑप्शन देता है कि अगर बाहर का आपका कोई बाहर का मॉडल है तो वो भी आप इस पे लेके आ सकते हो, ठीक है, ताकि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, दे गिव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, दे आर नॉट, ताकि यू नॉट टोटली डिपेंड ऑन देम। तो जैसे उसमें दूसरे वो मॉडल है वो भी इंटीग्रेट कर सकते हो आप इसमें, दैट्स व्हाई सेइंग कि क्लाउड का मॉडल है, बट आपका पैसे ही कुछ मॉडल हैं जैसे दैट्स ऑल ऑलरेडी यूजिंग गूगल, राइट, या वर्टेक्स एआई का, तो वहाँ पे भी वो मॉडल यूज कर सकते हो आप, बिकॉज दैट इज ए वर्क स्पेस टाइप रहता है ना गूगल क्लाउड वर्टेक्स एआई, वर्क स्पेस है जहाँ पे आप गूगल का भी मॉडल यूज कर रहे हो तो दूसरे को भी मॉडल यूज कर सकते हो, ऐसा है। एंड जैसे कि जैसे आपका है ना कौन सा ये बोलते हैं ग्रॉक, ये हगिंग फेस, तो हगिंग से ओपन सोर्स के लिए है, राइट, वो प्लेटफॉर्म है, अलग अलग मॉडल हैं, तो वहाँ पे आप दूसरे मॉडल भी यूज कर सकते हो अलग अलग एक जगह करते, तो ये हगिंग, ये गूगल का हगिंग फेस है, where you know they will giving the options to take the model even from different vendor as well. So hope I answer your question. ये Yeah. doubt तो बाकी में देखा जाए तो यही आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट, थोड़ा बहुत कुछ नया कंसेप्ट है, लेकिन ऐसे ही है जैसे देखोगे, अच्छा आर रैग है, रैग में कि चंकिंग एम्बेडिंग, ये नया कंसेप्ट नहीं, कोई पुरानी कंसेप्ट है, चेकिंग BM25 लेक्सिकल सर्च, ये नोन कंसेप्ट है, मल्टी इंडेक्स रहेगी, मतलब काम वही है बट ऑन दैट प्लेटफॉर्म ओनली, ओके, कंसेप्ट वाइज कुछ नया नहीं, एक्शन नहीं, फीचर विद द एक्शन द थिंकिंग इमेज सपोर्ट पीडीएफ साइटेशन प्रॉम्प्ट कैशिंग रूल्स, देखो यहाँ पे भी एमसीपी आ गया कि इफ यू नीड टू वर्क ऑन एमसीपी दैट व्हाट यू विल डू हियर, तो इट इज जस्ट अबाउट अ नॉलेज ऑन सेम चीज कि उस प्लेटफॉर्म पे कैसे करनी है, एजेंट वर्कफ्लो पैरेललाइजेशन चेनिंग राउटिंग एजेंट टूल एनवायरनमेंट इंस्पेक्शन वर्कफ्लो वर्सेस एजेंट, ये सारे कंसेप्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, याद है? ये सारे हम लोग कवर कर चुके, नहीं कर चुके, एजेंट पैरेललाइजेशन चेनिंग राउटिंग, ये थोड़ा डिफरेंट है, एनवायरनमेंट इंस्पेक्शन था ये थोड़ा पता नहीं क्या होगा इसके अंदर, बट इट मे बी वर्कफ्लो वर्सेस एजेंट, ये भी कर चुके हैं। तो कुल मिला के ऐसा है कि जो भी हम तो पढ़े हैं ना, बस उस नॉलेज को रिवाइज करके एग्जाम देना है, आई बिलीव। बाकी क्लाउड एपीआई में देखो तो क्या है, वही है, गेटिंग एन एपीआई की, मेकिंग रिक्वेस्ट, मल्टी टर्न चैट एक्सरसाइज, अच्छा ये कवर कर चुके हैं ना शायद हम लोग, रनिंग प्रॉम्प्ट वैल्यूएशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम लोग कर ही चुके हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्लियर डायरेक्ट एक्शन और प्रॉम्प्ट वैल्यूएशन, और बाकी क्लाउड इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, स्कीमा टूल स्कीमा हैंडलिंग मल्टी टर्न कन्वर्सेशन वगैरह, ओके, ऑल दीज थिंग्स भी Claude with the tool we already cover. Again here also rag and agentic search, introduction to rag, chunking, embedding, full rag, implementing BM26 model MCP. So this is the one. ये सिंपल वाला MCP है उनका, तो MCP भी ऑलरेडी कवर है कि हाउ MCP इंट्रोडक्शन क्लाइंट प्रोजेक्ट सेटअप कनेक्टिंग विद MCP क्लाइंट टूल कैसे बनाना है, जो हमने एक बार MCP करा था उसमें, वो एक ही सेशन लिया था हमने, मी एंड द शिवा मैडम कवर्ड इट, so I think this is the same concept only, we just need to revise and we should be good with that. फिर क्या अमेजन बेडरॉक, अच्छा ये दिस वन वी ऑलरेडी डिड इट, राइट, आई थिंक आई ओपन द डुप्लीकेट वर्टेक्स एआई क्लाउड एपीआई, ये कोर्स का था, ओके, दैट्स वन ऑफ द कोर्स क्लाउड कोड इन एक्शन, राइट, दैट इज वन ऑफ द उनका सिलेबस है, तो कवर किया था मैं, उसी के वीडियोस वगैरह हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं, लुक्स लाइक वी नीड टू गो थ्रू इट, बट इसका रजिस्टर कर लेते हैं कैसे भी, तो क्लाउड कोड इन एक्शन, राइट, वो उसका सिलेबस है, रिज्यूम करोगे तो एडवांस वाला हम कर ही चुके हैं, ये लिंक हमने ओपन कर दिया है, दिस द वन, and so this was one of the link that I was saying, this is the link that I open again, this is the same link। अच्छा ये रिसोर्स काफी यूजफुल लग रहा है मेरे को, बिकॉज दिस इन द गिटहब एक्शन इट इज गिविंग डिफरेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, मैसेज टूल यूसेज ऐसे करते हैं तो, अच्छा उसके अंदर का डॉक्यूमेंट ओपन करेगा, टूल प्रोवाइड द मोर डिटेल टू इट,
but it is also good resource. Okay, तो एक्सप्लोर करना है, nothing new. This the syllabus. Yeah, that's it. Actually, I explore from my side. तो टू ऐड समथिंग लाइक दैट, मेरी कंपनी ने भी क्लाउड कोड यूज करना स्टार्ट किया है, तो आई टुक दिस ट्रेनिंग क्लाउड 101, क्लाउड कोड 101 ट्रेनिंग, आई एनरोल्ड एंड टुक इट। उसमें इन्होंने मतलब बेसिकली यही बताया कि क्लाउड कोड जब यूज करते हो तो उनकी क्या टूलिंग है। कोई भी आप डेव टूल यूज करते हो ना, तो उनका खुद का स्ट्रक्चर होता है, उनकी खुद की कमांड्स वगैरह होती हैं। तो वही सब बताया कि हाउ यू सेट अप द क्लाउड कोड इन योर लोकल एनवायरनमेंट एंड हाउ यू वर्क विद द कोड यूजिंग क्लाउड कोड ऐसा करके। तो हाँ, तो उसमें जो 20% वाला वेटेज है जिसमें बताने की कोशिश कर रहा है, लग रहा है वही है। ठीक है, कोई नया स्टेप होगा जो हमने नहीं किया है। ठीक है, मैंने भी इवन आई इंस्टॉल ऑन माई फ्रॉम कंपनी साइड एज वेल, सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक क्लाउड कोड डेस्कटॉप। ठीक है, आई ट्राई टू यूज इट बट दे हैव नॉट फुली, अभी काम नहीं कर रहा है। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग इट अप। एक बार सेटअप हो जाए तो करेंगे, अदरवाइज आई विल ट्राई टू डाउनलोड माई ओन, ओके, outside of the company one, and then try to see it कि कैसे। बाकी तो फिर डॉक्यूमेंटेशन है, थोड़ा पढ़ना है, और that's what we can do it, and yeah, इतना that's what I did actually till now. अब बाकी के बचे टाइम में कुछ कुछ सजेशन है, कुछ कुछ बोलना हो, they are free to do it, otherwise yes sir. हेलो। हेलो, हाँ अमरदीप सर। अरे मोहन सर, एक चीज पूछनी थी मुझे। आपने कुछ आईडी यूज किया, राइट? आपने ये प्रीवियस एम्प्लॉयर का यूज किया है ऐसा? मतलब नहीं, मैं अच्छा ईमेल आईडी नहीं, मैं एक्चुअली आई वर्क फॉर माय क्लाइंट वाया कॉग्निजेंट ओनली, सो आई एम कॉन्टेक्ट टू कॉग्निजेंट, तो उनका ईमेल आईडी है मेरे पास, तो एक्टिव है मेरा, दैट इज हाउ आई यूज इट। तो ऐसा होगा कि शायद आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी बजाय ट्राई करने के आप कंपनी का ट्राई करो, क्या पता पार्टनरिंग हो आपकी क्लाउड के साथ, क्योंकि मोस्टली ये दिस इज द इवॉल्विंग लैंडस्केप ना, तो ज्यादातर लोगों की पार्टनरशिप कर रहे हैं उनके साथ, बिकॉज काफी चल रहा है, सो यू मे बी हैविंग दैट। ओके, तो मैंने आप ट्राई किया था, बट ऐसा कोई कहीं पे लिस्टिंग नहीं है कि कौन कौन से पार्टनर्स हैं अभी। नहीं, तो आप अगर ये देखो, ये वाला लिंक जो है, एक मिनट बताता हूँ लिंक्डइन पोस्ट जो था, ठीक है, आप ये क्या बोलते हैं कि ऐसे करो कि रुको, ये वाला लिंक पे आपने एक वो वाला जो रजिस्टर वाली जो लिंक थी सर ने भेजी थी, लिंक है रजिस्टर वाली, आप पे उसने आपने उस पर क्लिक कर रहा है, क्या कहते हैं, अपना प्रोफाइल बनाया, क्या मना कर रहा है, क्या कर रहा है? नहीं, मना तो नहीं करेगा, बट जो वीडियोस पे दिया है ना रजिस्ट्रेशन के लिंक पे, उसमें बोला है कि अगर आप पार्टनर के अलावा करोगे ना तो इट में गिव यू इश्यूज, तो इट मींस कि वो रजिस्टर करने नहीं देता, पता। इफ यू यूज इट सम अदर नॉन पार्टनर ईमेल आईडी, इट डजंट अलाउ यू टू रजिस्टर फॉर द एग्जाम एज वेल, राइट? I also tried it. You can allow me to register for the exam. तो रजिस्टर फॉर द एग्जाम विद योर पर्सनल ईमेल आईडी। तो मैंने ट्राई किया था, जो मेरी कंपनी ने अभी इनसे वो किया है, क्या क्लाउड कोड का लाइसेंस लिया है यूज करने के लिए, तो मुझे लगा मैं पार्टनर होंगे, लेकिन नहीं है। बट तब से अलाउ किया रजिस्टर करने के लिए आपको। हेलो या दिस इज दीपक हियर। बस मैं विप्रो के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने अभी, आप एक बार लिंक मुझे दोबारा से भेज सकते हैं? हाँ, मैंने भी लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी है, और मैं यहाँ भी भेज रहा हूँ, ठीक है। आई एम सेंडिंग व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो। यहाँ भी भेज दिया हूँ मैं। अगर इस वाली लिंक पे यू जस्ट रजिस्टर ऑन दिस लिंक, ओके, जाओ। स्किल्स का जो लिंक था, उनका जो ट्रेनिंग का, ये सर्टिफिकेशन कोर्स का कुछ स्किल्स करके लिंक था, जार और समथिंग, उस पे विप्रो के आईडी से किया तो दैट आई वाज एबल टू, वहां तो लॉग इन हो गया। अभी मेन क्लाउड को कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, आई एम लैगिंग इन दैट। हाँ, वो स्टेप अगर ये वाली जो रिक्वेस्ट वाली लिंक है ना सर, अगर आपने अपनी कंपनी की आईडी से इस पे रजिस्टर करो यहाँ पे, ठीक है, ओके। अगर आपने साइन अप यहाँ कर लेते हो, आप कंपनी की आईडी दो और साइन अप करो,
अगर आपने कर लिया मींस यू आर द पार्टनर, दैट्स इट। पर्सनल ईमेल आईडी काम नहीं करेगी इससे। अच्छा, आज ही ट्राई करता हूँ। कभी अभी ट्राई करो, अगर आप बना लेते प्रोफाइल कंपनी के, फिर ट्राई करो। मेरे आई वाज हैविंग ऑप्टम आईडी। सर मैं एक्चुअली मोबाइल से कॉल अटेंड कर रहा हूँ। तो इसमें ऐसा है कि जो नॉन पार्टनर्स ईमेल आईडीज है, अगर आप पर्सनल ईमेल आईडी यूज करते हो ना, तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ एग्जाम का करने नहीं देता, कोर्स का कोर्स का जो फ्री कोर्सेज हैं उसका एक्सेस मिल जाता है। But it will still gray out your register for exam if you are not a partner or your company is not a partner with Claude. Actually, that's why it's not allowed. तो अभी जैसे अभी ये सर बोल रहे हैं ना कि अगर आप उसमें पार्टनर हैं, जैसे भी Cognizant है, शायद I think Deloitte है, few other companies are there. If you are having that email ID, then it will allow you to register for the exam as well. तो वो डिफरेंस है सर। अगर जो ऐसे मैंने किया ना, ठीक है, तो अभी नहीं करेगा रजिस्टर फॉर एग्जाम वो आपको। क्या रजिस्टर, ऐसे रजिस्टर के लिए बोल रहा मेरे को। अगर आप अपना ईमेल आईडी दो, अपना कंपनी का ईमेल आईडी दो, तो वही मना कर देगा। अगर अलाउ कर देगा ना, देन यू आर ओके। तो फिर आप रजिस्टर कर दो। फिर द मोमेंट आप करोगे तो फिर यही कोर्सेस आने लगेंगे कि जो मेरे को दिखाई दे रहे हैं ना, राइट? करेक्ट। नहीं तो हमें कोर्सेज का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, जो एग्जाम के लिए है उनका एक्सेस डायरेक्टली नहीं मिल पा रहा है। हाँ, डायरेक्टली नहीं मिल पा रहा है। और क्लाउड का जो एपीआई वगैरह है डाउनलोड करना, वो पर्सनल ईमेल आईडी से अलाउ करेगा। वहां पे मेरी कंपनी आईडी काम कर रही है, ठीक है। मैंने ऐसा कहा, उसके एपीआई के लिए पर्सनल ईमेल आईडी यूज कर रहा हूँ मैं, और इसके लिए वो कंपनी वाला कर लिया। तो जो भी तुम्हारे पास वेंडर का, कंपनी का जो भी हो, ट्राई करो, शायद हो जाए। और इफ नॉट इन द कमिंग डेज, आई बिलीव वो ओपन कर देंगे शायद। आई विल दे विल ओपन। Most of these resources which you are showing, जो preparation के लिए है, are these accessible without registration? ये जो मैंने रिसोर्स शेयर करा वो तो एक्सेसिबल है। दी 4 लिंक, ओके, दी 4 लिंक दैट आई शेयर्ड, ओके, ये लिंक एक्सेसिबल है। दैट विल गिव तो मेरे को भी ओपन हो रहा था लिंक, तो मैंने ओपन किया था लिंक, डबल उस पे जाके ओपन हो रहा है जैसा आपने दिखाया। बहुत सारे कोर्सेज ना फ्री हैं इसके अंदर, जैसे उनके लिए रजिस्ट्रेशन करो या नहीं करो, पार्टनर ईमेल आईडी से फर्क नहीं पड़ता। वो कोर्सेज फ्री हैं, एनीबॉडी कैन डू दैट। और मनोज सर, आपने भी बुक शेयर की थी कंटेंट इंजीनियरिंग के बारे में, तो क्या कहते हैं, मैंने क्या कहा ओरिजिनली एक बुक पढ़ा, मेरे को क्लाउड कोड का थोड़ा समझना था। मैंने क्लाउड कोड समझाने की कोई बुक मिल जाए इनके 101 के अलावा कुछ, तो आई गॉट वन बुक फ्रॉम सम ऑथर एम्प्लॉय, एंड ही टॉक्स अबाउट, फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट द कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। तो उसने उसको थोड़ा अच्छा समझाया है कि व्हाई द कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग मैटर्स, बिना कुछ किए, मतलब क्लाउड कोड को यूज किए कि पहले इसने कहा यू हैव टू नो द हाउ द क्लाउड कोड आर्किटेक्चर वर्क एंड व्हाई कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग मैटर्स। या कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग तो आजकल हॉटेस्ट टॉपिक है इस फील्ड में। तो शेयर दैट लिंक आल्सो। अच्छा, ये बताओ मनोज सर, अब आपके तो ये तो हो गया एजेंडा, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे। अब आगे क्या के लिए, पढ़ाई के लिए क्या करें कि हम जो क्लाउड कोड एजेंट एसडी के जो कर रहे थे उसी को अपने हिसाब से मैंने थोड़ा पढ़ा है, उसी को कंटिन्यू करें या कोई बुक पकड़े? ठीक है, क्या देख लो कि ये क्लाउड सर्टिफिकेशन के लिए अगर इनफ लोग इंटरेस्टेड हैं, देन आई थिंक दिस इज द राइट ट्रैक व्हाट यू आर डूइंग, राइट? We can take like one topic every week, and maybe like in 2-3 months we can complete the whole thing. Maybe it will not even take 2-3 months, like you said, right? We have already covered a lot of these things in previous books and meetings, right? So 4 से 6 हफ्ते में हो जाए। हाँ, right. 4 से 6 if people are not interested in going deep specifically for this certification, फिर जो है कोई बुक पकड़ लेते हैं, बिकॉज बुक का क्या है ना कि वो पढ़ना आसान है, वो मीटिंग्स आसान है उसकी। राइट, आपसे बोले मीटिंग आसान है कि थोड़ा बहुत थ्योरी है, थोड़ा उधर तो चलेगा। उसमें क्या है कि डेप्थ में जाना है, तो यू नीड टू हैव द सेटअप, कोडिंग, सब कुछ आया ज्यादा हो जाता है वो। एंड दैट्स एप्लीकेबल टू, लाइक बुक के कॉन्सेप्ट है, दैट्स एप्लीकेबल टू मल्टीपल रोल्स, लाइक इफ यू आर डेवलपर, आर्किटेक्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, सब लोगों को कॉन्सेप्ट सीखने की इच्छा होती है। एग्री, क्योंकि बुक के कांसेप्ट कॉमन होते हैं, जो भी अपने हिसाब से चल जाता है। इसमें क्या स्पेसिफिक हो जाता है, तो थोड़ा ऐसा तो राइट, आई एग्री। तो अभी लास्ट टाइम वैसे वोटिंग करी थी, तो क्लाउड पे
कि सर्टिफिकेशन के लिए ज़्यादा लोगों ने एग्री करा था, अराउंड 50 पीपल डू इट, ओके, इवन आई एम पार्ट ऑफ दैट वन एज वेल। तो फिर भी एज यू सेड कि विल प्रेफर कि मेजॉरिटी में कि एवरीबॉडी लॉट ऑफ पीपल इंटरेस्टेड पीपल हों। हाँ, तो वही सर्टिफिकेशन का थोड़ा सा वही है कि आधे लोग तो रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज पार्टनर नहीं है, उनकी कंपनी है। हाँ, ये भी सही कह रहे हो सर कि रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे तो बड़ा हार्ड हो जाएगा। या तो बाकी लोग यहाँ पे पूछते हैं हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली डूइंग दिस सर्टिफिकेशन, क्लाउड सर्टिफिकेशन, अदर देन राधा मोहन? मनोज, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, अभी आजकल मैं थोड़ा फ्री हूँ। दीपक बोल रहा हूँ। हाँ दीपक सर बताइए। तो बस अभी थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी तक मेरा काम एआई में नहीं था, तो मैं एआई की साइड पे बिल्कुल नया हूँ। तो अभी यही सोचा है कि ये शायद इसमें थोड़ा टाइम लगा सकता हूँ, और इसलिए ट्राई करने की सोच रहा हूँ। तो आई एम इन। एक आप ये क्लाउड का सर्टिफिकेशन करने के लिए सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ यार, हाँ, ये थोड़ा कुछ तो एआई की लाइन में आगे बढ़ूं। हाँ नहीं, अच्छा है। स्टार्टिंग यहाँ से करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मे बी या तो एक काम ये कर सकते हैं कि कोई बुक पकड़ते हैं, वो दैट बुक विल बी आवर लाइक रेगुलर मीटिंग, एंड इन बिटवीन व्हेनेवर देयर इज समथिंग यू मेक प्रोग्रेस ऑन क्लाउड कोड दिस सर्टिफिकेशन, we can have like some meetings about that, or maybe 15-20 minutes, half an hour, जितना भी तुम्हारा कंटेंट है वो पहले क्लाउड सर्टिफिकेशन का कंटेंट कवर कर लो, then we can follow the book. ये भी अच्छा आइडिया है कि कम से कम 2 ऑप्शन हैं कि जिनको सर्टिफिकेशन पे ज्यादा फोकस करना है वो लोग कर लेते हैं, और या नहीं कर पा रहे हैं कुछ है तो बुक को मतलब कर लेते हैं। तो ये भी 50-50 सही है कम से कम, सो दैट यू नो वी हैव द मेनी पीपल इंटरेस्टेड पीपल ग्रुप में। ठीक है। सो एक तो वो बुक है ही कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग वाली, आई थिंक दैट विल बी ऑफ इंटरेस्ट फॉर मेनी फोक्स, लाइक अगर वो लोग डेटा इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कुछ भी एआई का कर रहे हैं, देन दैट्स रेलेवेंट। और कोई एक दो बुक्स अगर सर्च करो, आई थिंक वो डेटा एक जो हमने वो डेटा इंटेंसिव वाली, राइट, that will go very deep. I don't know how many people will be interested. I mean, I'm definitely interested in reading that book with this group. पर उसके लिए मेरे को पोल कर लेना ज़्यादा बेटर है दोबारा से। तो अच्छा, हाँ वो भी ठीक है। और ये कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग वाली बुक सर आप सजेस्ट करे थे क्या ग्रुप में? हाँ, मैंने एक सजेस्ट की थी, लाइक one of my friends, he's very deep into it. I asked him, so he's shared that book with me. तो पीडीएफ है क्या आपके पास? नहीं, पीडीएफ नहीं है मेरे पास, वो इसमें है, ओराइली में है। I can share like a PDF of the chapter that we discussed, like one chapter at a time. Yeah. Okay. The book is called Knowledge Graphs and LLMs in Action. Yes, sir. Orally में है वो. Yeah, I can see it. अच्छा ठीक है, तो ग्रुप में आप डाल सकते हो, भी तो नहीं। तो आज के लिए बचे हुए टाइम में क्या करें कि बचे हुए टाइम में क्या करें? भी जो एजेंट है उसको कंटिन्यू क्या करना चाहते हैं? बचे हुए टाइम में जो मैंने कुछ पढ़ा है, मैं जो बुक जो बोल रहा हूँ ना, उसका मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहा है, तो वो बोल देता हूँ मैं। अरे बहुत सही सर, ठीक है, गुड टू गो। चलो, मतलब मेरे को इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो भी इसका कंटेंट है आप मिलकर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो। हाँ यार, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। Okay, maybe you might see. Let's see my screen. Okay. Not yet. Yes, we can. Okay. So actually, like I was just search, like I want to learn about cloud code. Like hands on the book में थोड़ा अच्छे से समझा देते हैं, इधर स्ट्रक्चर्ड वे टू लर्न। लाइक तो मैंने पहले क्लाउड एक्शन 101 ट्रेनिंग इससे की, तो मैं मुझसे कहा यार वो तो काफी हाई लेवल है, थोड़ा दिखा दिया, समझ में आ गया, लेकिन बुक्स गिव मोर डिटेल लाइक हाउ थिंग्स वर्किंग बिहाइंड द सीन ऐसे करके। तो मैंने ये वाली बुक कहीं से मिली मेरे को, एजेंटिक कोडिंग विद क्लाउड कोड, तो मैंने ऐसे थोड़ा इसको पढ़ा मैंने। एक फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट, इट टॉक्स अबाउट स्टार्टिंग विद कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग।
So he explained like how cloud code is cloud code. What is cloud code? So cloud code is an AI agent. Okay, so and this is AI agent and it use behind the scene LLM. तो उसमें ये बताया गया है कि ये LLM talking to LLM is just very simple thing now. Like you LLM को आप prompt भेजते हो, वो आपको response करेगा. That's a very straightforward. There nothing involved in nowadays. But इस उसके बाद जो आपका agent जो आता है, now it does lot of engineering around that response. How you manage the response, how you talk like तो उसमें तो असली बोल रहा है इंजीनियरिंग उस पर अप्लाई होती है, ना कि LLM से बात करने में. So in this scenario, like he said, like the first concept the context engineering. तो मेरे को समझ में आया what is context like. तो जैसा कि अभी it is all about cloud code. तो क्लाउड कोड क्या करता है? क्लाउड कोड हमारे पूरे कोड को, जैसे कि हमारी कोई गिट रेपो है, पूरा हमारा सॉफ्टवेयर सारा कोड बेस है. तो हाउ क्लाउड कोड विल नो all about our architecture, design, code files, our commands, our pipelines, everything. How it knows completely, and that way we can talk cloud code using prompt and say, okay, do this task. Like कोड कमिट करो या कोड को गो थ्रू करके मुझे बताओगे ये बग कहाँ पर है कोड में. So how it manage everything? So it says it manage through that call like so how cloud code gonna tell all this information like आपका कोड का आर्किटेक्चर डिजाइन डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, वो कैसे पता चलेंगे LLM को. तो there it says it's apply the concept of context engineering so that you will get better answer from the LLM. And to manage the context, what cloud code does. तो इन्होंने कुछ बताया है इसके बारे में. So if you install cloud code and then you will run some command, then it will create some .md files to manage your in-memory context. So if you see like this is how this is describing some simple way of the context window. So you guys know like what is context window in general. अगर LLM से बात करते हैं, एजेंट से बात करते हैं, तो उसमें आपको इंस्ट्रक्शन जाती है. इंस्ट्रक्शन आई विल कैन से लाइक यूजर इंस्ट्रक्शन, नॉलेज जो उसका आपका जो प्रॉम्प्ट है, जो आपका जो सिस्टम प्रॉम्प्ट बनेगा या तो और भी इंफॉर्मेशन जो आपको LLM को जाएगी, दैट्स नॉलेज. एंड टूल्स की इंफॉर्मेशन लाइक MCP टूल्स, दैट ऑल इज गोज टू द LLM and through the context window. So you see like a context window can grow large like as we talk more and more to in a single session, the context window can grow more. Then how you gonna manage your memory or the context window size? So what are the behind the scene cloud code does as agent, that is talks about something here. So going further, this graph you can say human ने LLM को बात किया, tool कॉल किया, feedback. This is like a टूल कॉलिंग लूप. लाइक अभी जो हम जो क्लाउड कोड में पढ़े थे कि एजेंटिक लूप होता है, कि मतलब एजेंट लूप में चलता रहता है, आप उससे बात करते रहते हैं, LLM से बात करता है, फिर आपसे कुछ रिस्पॉन्स देता है, आपसे फीडबैक लेता है, फिर कॉल करेगा LLM को आपके बेस के यूजर इंटरेक्शन के बेस पे. तो ये इनफाइनाइट लूप चलता रहता है. दिस इज लाइक हाउ द क्लाउड कोड एजेंट वर्क्स. एंड देन इट्स सेइंग लाइक बिकॉज दिस इज लाइक इनफाइनाइट लूप, सो यू से लाइक पहला आपने कुछ क्वेश्चन किया, उसका आंसर आया, आपको समझ में नहीं आया कि नहीं, कैन यू डू लाइक फर्दर मोर रिसर्च फॉर द बेटर आंसर. तो आपने फिर वही पिछला कॉन्टेक्स्ट को लेके आपने फिर से LLM को भेजा. तो इट सेज लाइक ये मल्टी टर्न discussion happening with your LLM, and this will keep growing. Your turn 2, turn 3, turn 4. This is how context grow with across multiple turn. So that's why like context window management topic comes like in this cloud essential architecture also. So what is the problem when your context window increase? It says there are few problems that are going to happen. The context window can exceed its size limit, cost and latency increase, agent performance starts to degrade. So अगर आपका एजेंट की परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी तो वैसे ही हम लोग बोल देते हैं कि मजा नहीं आ रहा है काम करने में कुछ. तो इस इज दैट्स व्हाई इट मैटर्स. सो हाउ यू मैनेज दिस कॉन्टेक्स्ट विंडो. Then so and there is like these three things it talks about, like what can happen with your context. If context is allowed to grow without structure, selection or control, then various problems will start to appear in agentic systems such as following: context poisoning, when a hallucination from a tool call or LLM call enters the context and start affecting future output. तो मैं इसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ है. जैसे कि usually I ask in my ChatGPT, I usually ask application security related questions in my session. So okay, tell me about this vulnerability, tell me about this CVE, or tell me about this this kind of thing.
And then one day I asked in my chat GPT session, and I asked some H1 related some legal question. I said, okay, what is this H1 rule and all those things? It give me the answer, and in the end, it says, do you want me to create a risk matrix as a like AppSec engineer? Why this the AppSec engineer topic come into my this chat? So you say like, so then I realize, okay, so then I reading this, then I say, okay, this is what is called context poisoning, context confusion, context class. So okay, if this kind of answer our agent will give to the end user, and definitely will say like the trust will gonna reduce, like, okay, it's mixing thing, then problem can happen. So these are problems that can happen if we are context not managed well. So context poisoning, context confusion. Okay, yeah. So when unnecessary context influence the response, even though it is not relevant to task, and context lab with different parts of context contradict each other. So I mean, like, very straightforward. Then in the next section, we discuss techniques for better context engineering. It talks about how the context engineering is done by the cloud code. So then, yeah. So if you see this section, cloud code and its context engineering strategies. So how you manage the context. It says rise context, select context, compress context, or isolate context. So write context in the sense, so मैंने जो देखा है cloud code when you install and for your code repo, once your cloud code plugin install in your Visual Studio or VS Code, it will ask you to run some command, like say init command. What is that? It will go through your code. It will run the cloud code, like read all your code files, and it start creating some .md file with and it will it start creating some kind of documentation or if your project, and then it generate .md file. So that's what's called something write context. So your and persistent memory system. So your whole documentation or your code files or your code architecture will be saved into your repo itself. So that context or that document will be now part of whenever you talk to your cloud code agent. So it knows, okay, what information it has to persist every time then it is talking to your LLM. So cloud code as will create .md files. I say when I saw first time when I downloaded the code, I say there are so many .md files cloud code related. Who generated that? Then I realize now when I go through this, then I say, okay, this is not like some developer writing the .md files for cloud. It's cloud code tool itself generating those MD files, and it will keep that knowledge permanently, and that gonna use as a context. Then write context, then select context, techniques, intelligent context retrieval and injection. So maybe like this techniques, when you write a prompt to your cloud code agent, it's gonna understand your prompt and it will look into some of the MD files and then say, okay, which one is relevant to send to LLM. So that's what it talks about. Complex context. So complex context, when you say like if our long chatting session is grow too long, what it does, like as you know, like it will try to all your session history, your chat session and your discussion, it will like reduce to like some sort of format, highlight, it will create summary and it will store in your local directory somewhere in the system. So it say like, so it knows like how whatever discussion, whatever the important thing that you have to keep in memory to next time when you talk to the agent. So, and this helps, compress context will help. So there is a commands also in the cloud code which says, okay, I say save context, something like there are less commands which compress your chat session history for your agent, so that I think I have not run into the problem like when the context window grows, then we use, then we'll know, but it just talks about they do some context contraction or compression. Then isolate context, multi-agent and scope context management. And another techniques, they say isolate context. So you know, like when we have a multi-agent system, there is one master agent, then we have different sub-agent or kind of architecture we follow. So what they say, like your each agent have their own context. Like so they say like a code review agent, like cloud code agent is the one big main agent. Inside that you can create your own sub agent. You as a developer, we can also create, or as a configurator, we can create some sub agent for some specific task. Cloud could also come with the existing some built-in sub agent like a code review agent, security audit agent, that kind of stuff. So it says like your one agent should not manage all the tasks for your work-related task.
So because that's gonna create a long context for a single agent, and that's gonna give you a context related problem. So what it is, so it distribute your task to sub agents, and each sub agent gonna manage their own context. So your master agent doesn't worry like, okay, what are the context needed for the code review agent or the security testing agent or the, you say like a unit testing agent kind of stuff. So they know those contexts will not clash. So that way it asks you to one way to segregate context between different agent, and to get better output from your main master cloud code agent. So maybe, so when we are, I think, so when we are using cloud code, like as a solution architect, we should plan these activities, like what kind of server agents we needed and how we gonna manage the context. Okay, so in this, okay. So I think this is how it tells some pictures like from the LangChain. I didn't go through much, but I just understand like what this concept is there. So these are all these techniques part, like if you go isolate context, parsing context instead, hold in environment sandbox, parsing across multiple agents. So if you just like, if you look for the cloud code created files in your local directory, you will see like there will be multiple files, and we can see that like, okay, how it is managing the context, why these so many files getting generated automatically. It is all about to manage the context in your chat session. So something this good to know. And now I understand why there are so many .md files cloud code generate in the system. Okay, so you see this talks about write memory, cloud MD file persistent, user memory. So they also manage like a context is managed in the layered, like one context is like at your project level, one context is managed at your user level. User level in the sense like suppose you have a very writing your you want to follow some specific design pattern. There's another developer want to follow some other design pattern or coding style. Okay, so that kind of your own preferences that you can save it in your own local context. So that's why it's called the user memory context. So if you see this folders, you say, oh, there are some files will be there where you can save your own style. Okay, like I am an application security tester, so I want to, whenever I am running some reviewing some kind of code, I always want, okay, also look for some security vulnerability. That kind of context I can save it as in my user preferences. Okay, pure developer might not be interested, so he will say, okay, no, he don't want to run all those response should not be security related stuff should not be come into my discussion. So that things they go under as a part of user memory. Okay, and this project memory in the sense, like I said, it's like your project design architecture, what kind of tooling you use. That's common to all the users, all your developers, right? So they will create a single cloud MD file in your Git repo itself or wherever your code exists, and it will talk. So if you once you set up your cloud code, then you will see, okay, yeah, this is how this thing, like a coding standard architecture overview. These are common to for every developer. So there should be like a project level memory, user memory is for your personal preferences. And then it says dynamic memory imports. So in your context, so like if you have like different documents related storage for your software development, like suppose your session authentication or your, I say, some SQL procedure, because in your code, your every feature, they have their own documentation, and that document is something that you want to refer into your .md file. Then they say you can write this add path to memory.filemd. So here say like this something you can keep adding. You can dynamically, you can like, so once a .md file is got created, it doesn't mean like it will be static forever. During your discussion, you can also add some dynamically, you can add some .md files to change your context. So that kind of capability is also provided using, so this dynamic memory import. So that's what I noticed, like there is some command this ampersand, all those stuff, why they mention in the .md file. So it helps. So this makes some sense to me. Okay.
and it does talks about like one problem, like so it say like you if you have a one cloud.md file which contains your context, right, and then every time like suppose to that cloud.md, suppose like you edit some dynamic context, you committed the context in your context.md file. Now another what can happen, another developer can also add some same path, like you say like this kind of path to the, well, he doesn't know, suppose he doesn't know, and he is still able to edit, okay, this md file he also needed to improve your main cloud.md file. So what gonna happen, like with this path it can repeat the same information is added 2 times in the same context. So it says like to avoid this problem, like duplicate context into the same file, it creates some files. So here it comes some kind of, this maybe is a hook. We are talking about some hook into like what is the mini hook, where whenever you are adding through prompt, you are adding some context, your main context, you are adding some another context, then it will check whether that context already exists in the main MD file. If it exists, then it will not do anything else. If it is new one, then it will edit. So maybe this is a very good concept. I like it. Like maybe every developer will or configurator with the cloud code will face this general issues. Okay, then intelligent context. Okay, yeah. So these all things are like related to how you interact with your chat session and how you gonna make your during the chat session, how you can add memory, everything, because during discussion you will know like, okay, write me code for this feature. They say if it created the wrong SQL table or the wrong SQL design, then you say, okay, no, I don't want these many columns in this table, or I want to change this, create 3 different tables or different normalization use. So maybe those kind of intelligent context retrieval, we have to give enough right instruction and context to your agent. So these kind of things come into picture. So as we become like more so they say that for cloud code, to get the best output from your cloud code agent, or you should understand how to talk, like how you structure your prompt, so that what gonna happen, like once like one example, like I got one new code, one new file, and there was some component getting used. I didn't know about that. What is that? So I just simply say, okay, could you please find me where this component is used? What it does, like cloud code agent, it took some time, around more than 5 minutes. Then it will it tells me, say, okay, to access this component, you have to go to this file, and one I'll answer it. But it took some 5 minutes to get that information. When I was reading this chapter, it says like to avoid this long running task, or you can also add, if you already know something about your task, like, okay, this component already is present in this files, then you can add that context to that, like add the rate files, like you add those files into your, when you're charting the window. That way it doesn't have to do that work which you already know. So that way it will save your time, and it will help also the chat agent to use it will use less effort from the chat agent. Like for that, we say like a token also getting used less, because you already given some hint to the agent how to work. Okay, so yeah, this is a compression context where your context is gonna grow, and if it's like, okay, there is maybe some warning might be coming, your context window is going more, then you can do compact. Clear means like you want to erase all your history. Suppose you fix one defect, you're fixing another defect on different file, then you don't want to mix your old file code with the new one. Then you say, okay, clear, and start the new session. So these commands that in cloud code is gonna play into picture. Okay, so this is context isolation with sub-agent that I talked in the beginning. Like you say, like a code review, you can define for as per your task, you can have different agent in your cloud code configuration. So that it's kind of like a same concept like MCP tooling or something, but to clean your context, keep your context segregated. Okay, so this is, so I feel like to get to use the cloud code as a smart developer, we should understood like how this context really play picture, what role it will play into our daily work or task. Even though I am not gonna do any development, but it's interesting. Then it talks about system prompts, why they matter. So it's
So system prompts like is something that a user message that gonna go to the LLM. It says like keep your prompt not same and standard techniques. Don't give big instruction to your agent. Be precise. Give as much information. You give proper guidelines. So it doesn't do the some unnecessary work, and also it doesn't give you like a big answer. Yeah, LLM should not give you big answers. So so usually for me, I write only one line. Okay, do this. I feel now after reading this thing, I'm not doing the thing right way. I have to write as much as I should. I write when I'm asking to run some kind of task, like a clear instruction I should be have. Like if I verifying some vulnerability, I say, so okay, what I want the like whether this vulnerability exploited, whether this vulnerability exists or not, or whether what is the remediation. Everything I should write separate instruction into my user message or system prompt so that it knows what is it has to do. It's not guessing its own. So that's my task. But if you look for some example they gave in this book, somewhere this is okay. So this, like one example, this is very example. So some user they rate some agent configured with this prompt. You are a bakery assistant. You should attempt to solve customer issues in a manner consistent with the principle and sense of company brand. Escalate to a human if needed. So this is one prompt a user used, or a prompt written in the system prompt. They say that this has so many problems. This is not very clear. So if you say like if better prompt, how they convert this prompt to in a better way. Okay, so they gave it some example. Okay, now you see this. What a good middle ground prompt looks like. You are a customer support agent for Cloud's Bakery. You specialize in assisting customers with their orders and basic question about the bakery. Use the tools available to resolve issue efficiently. You see like this. Then they also added more information. You have access to order management system, blah, blah, blah. Then how your response should behave, identify the core issue, gather necessary context. So in that sense, and the guidelines. So whenever some confusion happen to the agent, like what should respond when multiple solution exist, to the simplest one that one fully address the issue. So see, like those 3-line system prompt, they say if you write in better way, it becomes such a big context, such a prompt. And that is more clear to the agent to how to respond to the customer. So they say like you have to be good with your system prompt. And one more problem he was telling, like so sometimes your system prompt can be too big, sometimes it can be too specific. So we have to find a middle ground. This is just right. So that can happen. So this activity is like a iterative activity. So you will play with your system prompt, you will get some answer. If not feels good, then you will modify you again modify your system prompt, and then you will find that just right. What is the minimum like what is the optimal system prompt that you are looking for? So it is not a one-time activity. It will evolve over the time. That's what I learned about this thing. Okay, yeah. So in summary, that's it. Like so in summary, so this chapter all about like how you gonna talk, how you gonna manage your context with the cloud code, and better be with the system prompt. So that's all about this first chapter talks about, and it's very generic. It's nothing related to cloud code. If you say like it gives a good information how cloud codes use like context engineering and what we have to be aware of. But yeah, that was a good learning from this book. I will share this book, Agentic Coding with Cloud Coding. Maybe when we go through other courses, maybe this we can use if somebody want to learn about what this book talk about. So it's going to be good learning. Yeah, thank you guys. Hope this might help you. Thank you, sir. Thank you. जरा PDF share कर सकते हो श्याम? Can we share it? This It is book? shareable. हाँ, this one. Yeah. ये PDF आप डाउनलोड कैसे कर रहे हैं सर? Yeah, we cannot download the whole book, but we can say print. Then it will download this chapter itself, because this whole HTML is downloaded into your browser. So you can able to download this chapter itself like that. I do this techniques if you want to share some. Chapter by chapter कर रहे हो? Yeah, chapter by chapter. Yeah.
it is giving the option to go to packet बोल रहा है ना packet up में जाके, लेकिन उसमें proof मांग रहा है, give the proof to Yeah, like you have a book, like you purchase the book. Yeah, but yeah, for us. orally के थ्रू जा सकते हैं, but orally I don't know what it is asking. Yeah. See it. I will share. I will download this first chapter. I will share it. Thank you. I think like if we want to learn cloud, this book looks me good, like very practical. And this is written by some Google developer. So he talks very practical, hands-on example. It's not like, so I say, okay, at least it's thinking the way we think. अच्छा बढ़िया है सर कि एटलीस्ट जो हमारा मेन क्लाउड से रिलेटेड दैट्स अ न्यू थिंग दैट वी नीड टू लर्न. तो नॉट एवरीबॉडी हैव द एक्सेस टू दोस कोर्सेस, लेकिन बुक सब को थ्रू कर लेंगे तो लर्निंग हो जाएगी अंटिल पीपल गेट एवरीबॉडी कैन अलाइन हो जाएंगे इसी के साथ. तो अच्छा है. तो ठीक है. सो व्हाट द प्लान फॉर नेक्स्ट वीकेंड? आप चैप्टर करोगे दूसरा कंप्लीट सर? दूसरा 2 तो कवर कर दिए ना आपने? इसमें तो फर्स्ट चैप्टर था इस बुक का ये. तो if you want to go through this book, anyway I will be reading this book very quickly because it's like a very, so I can come if I know nothing, then I will go through this book. Yeah. हाँ ठीक है. तो आप अगला सेकंड वाला चैप्टर कर लेना आप, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर दिस क्लाउड कोड और बाकी कुछ प्रैक्टिकल पार्ट है वो मैं देख लूंगा. सो आई विल गिव 10 to 15. आई विल टेक 10 to 15 मिनट. Okay. So that is what about that other option that Manoj sir said, like context engineering book, उसका भी पोल चलेगा ना अभी? अगर उस पर सब रेडी हो गए तो then we will. हाँ बुक वही कर लेंगे. ये भी ठीक है. ओके. अगर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की बुक मिल जाती है वो भी रीड कर लेंगे. दैट विल बी गुड टू. यशाम एक काम करते हैं, ये बुक लाइक maybe you can cover this whole book in 1 or 2 meetings. Yeah, I think that's just a good motivation for me also to become expert with the cloud code. Yeah, so I can do that. तो ये बुक जो है अगले 1-2 वीक में कर लेते हैं कवर, एंड देन तब तक देखते हैं if context engineering still stays on top of our minds, we can do that other book. Okay. Yeah. Okay, that sounds good. Thank you everyone. चलिए, thank you, bye. Thank you. Thank you.